Let's continue with the chapter 1, conflicts in the profit versus value maximization principles. In any company, the management is the decision making authority that we know. As a normal tendency, the management may pursue its own personal goals, that is, personal profit maximization. But in an organization where there is significant outside participation, and that is shareholding and etc., the management may not be able to exclusively pursue its personal goals due to the constant supervision of the various stakeholders of the company, employee, creditors, customers, government, etc. Every entity associated with the company will evaluate the performance of the management from the fulfillment of its own objective. The survival of the management will be threatened if the objective of any of the entities remain unfulfilled. The wealth maximization objective is generally in accord with the interest of the various groups such as owners, employees, creditors and society. ठीक है, तो wealth maximization objective जो है कैसे होता है इन अकॉर्डिंग विद द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस ग्रुप्स. तो कौन कौन से होते हैं? ऑनर्स, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, सोसाइटी. एंड दिस it may be consistent with the management objective of survival. Owing to limitation, क्या है limitation? टाइमिंग लिमिटेशन, सोशल कंसिडरेशन, एक्सेट्रा इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. In today's real world situation, आज के real world में which is uncertain and multi-period in nature, wealth maximization is a better objective. Wealth maximization एक better objective है where the time period is short and degree of uncertainty is not great. Wealth maximization and profit maximization amount to essentially the same. The table below highlights some of the advantages and disadvantages of both the profit maximization and wealth maximization goals की बात करेंगे. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. प्रॉफिट मैक्सिमेशन क्या आता है? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रहता है, इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट रहता है, इजी टू डिटरमिन द लिंक बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजंस एंड प्रॉफिट रहता है. डिसएडवांटेज क्या रहता है प्रॉफिट मैक्सिमेशन का? एम्फेसिस द शॉर्ट टर्म गेन के बारे में एम्फसाइज होता है, रिस्क अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है, टाइमिंग के रिटर्न को इग्नोर करता है और इमीडिएट रिसोर्सेज इसको चाहिए होते हैं. प्रॉफिट मैक्सिमेशन केस में हम बात कर रहे हैं, अगर गोल हमारा है प्रॉफिट मैक्सिमेशन. अगर शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? हाईएस्ट मार्केट वैल्यू शेयर्स, हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो होते हैं वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट वैल्यू के शेयर्स बढ़ते रहें. दूसरा इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं? इट एम्फसाइज द लॉन्ग टर्म गेन की बात यहाँ पर देखते हैं. रिस्क फैक्टर को ये कैलकुलेट काउंट करते हैं. टाइमिंग की वैल्यू बात भी यहाँ पर कंसिडर होती है और कंसिडर शेयर होल्डर के रिटर्न की बात भी यहाँ पर कंसिडर होती है. लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? ऑफर्स नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड द शेयर प्राइस. के बीच में एक क्लियर डिसीजन नहीं आता है, रिलेशनशिप नहीं समझ में आता है. कैन लीड टू मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन. एग्जाम्पल, profit maximization can be achieved in the short term at the expense of the long-term goal, that is wealth maximization. For example, a costly investment may experience losses in short term but yield substantial profit in the long term. ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. कॉस्टली इन्वेस्टमेंट कर दी किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में हमने, जो कि अभी अभी तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे बहुत ज़्यादा आने वाली है. ऑल्सो फर्म द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, फॉर एग्जांपल postpone major repairs or replacement, although such postponement is likely to hurt its long-term profitability. ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो छोटी चीज़ को छोड़ दिया, मशीनरी को छोड़ दिया, लेकिन वो मशीनरी लॉन्ग टर्म में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देने वाली थी. तो ये बातें होती हैं. फॉलोइंग illustration can give us can be taken to understand why wealth maximization is a preferred objective than the प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म की बात करते हैं हमेशा और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म की बात करते हैं. समझ में आ रही बात? चलो आगे चलो. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डज नॉट कंसिडर द profit maximization does not consider the risk of the uncertainty, whereas the wealth maximization considers both the risk and the uncertainty. और टाइम वैल्यू को भी कंसिडर करते हैं. सपोज देयर आर टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई एट द प्रोजेक्टेड अर्निंग
ओवर द 5 years is as below प्रोडक्ट एक्स पे 10,000 करके वाई की 11,000 करके प्रॉफिट मैक्सिमेशन अप्रोच जो है वो वाई को फेवर करेगा ओवर एक्स हाउएवर if product Y is more risky then product X then decision is not as straightforward as the figure seems to indicate. It is important to realize that a trade-off exists between the risk and return. Stakeholders expect greater returns from the investment with the higher risk and vice versa. To choose product Y, stockholders would demand a sufficiently large return to compensate for the comparatively greater level of risk. The role of finance executive. Most financial management has come a long way from the traditional corporate financial traditional corporate financial से modern financial management जो है काफी आगे आ गया as the economy is opening and the global resources are being tapped, the opportunity available to finance managers virtually have no limits. A new era has ushered during the recent years for the chief of financial officers in the different organizations to finance executives is known in different name. However, their role and functions are similar. His role assumes significance in the present day context of liberalization, deregulation, globalization. चलो सही है. Changing the role of the finance executive. Finance executive का क्या changing roles है वो यहाँ पे लिखा है. Today CFO team is to add value well beyond the traditional role, cost management controls and acting as the concise of the organization. These roles are challenging enough. But today's CF is expected to work on the collaboration, serving integration of key business processes, the catalyst for change, including business transformation, and as a consultant or trusted business advisor in helping to create sustainable growth. Jeff Thompson, IMA President and CEO में ऐसी बातें करें to sum it up, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव जो होता है इसका रोल करता है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव में इंपॉर्टेंट रोल कंपनीज और पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल सक्सेस की बात करा जाता है गोल पॉलिसीज और फाइनेंशियल सक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं उसको देख लेते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग करता है वो जो पहले तो एनालाइज करना प्लानिंग करना है डिटरमिन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फंड्स टू एम्प्लॉय द फर्म डिजाइनिंग द साइज ऑफ द फर्म एंड इट्स रेट ऑफ ग्रोथ ठीक है किस ग्रोथ करना है उसका साइज कितना होना है एक दूसरा पूरा प्लानिंग का पार्ट है उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखता है इन्वेस्टमेंट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द फंड्स टू स्पेसिफिक एसेट्स किस किस एसेट्स में कितना कितना पैसा लगाना चाहिए एफिशिएंटली डिसीजन लेना है इसको थर्ड है फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन फाइनेंसिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेना रेजिंग फंड्स ऑन फेवरेबल टर्म्स विद पॉसिबल डिटरमिनिंग द कंपोजिशन ऑफ द लायबिलिटीज देखना है हमने मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज सच एज द वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट कैसे करनी है ठीक है कैपिटल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म और वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म डे टू डे रूटीन वाला पैसा कैसे उसमें देखना है रिस्क मैनेजमेंट देखना है कि प्रोटेक्टिंग एसेट्स जैसे कि हो सकते हैं इंश्योरेंस वगैरह लेनी है किसी चीज़ की तो ये रिस्क मैनेजमेंट उसको देखना है तो चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स जो होते हैं या फिर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं इसके मेन मोटे मोटे काम दे रखे हैं एज ए ट्रेजरर कैश मैनेजर क्रेडिट मैनेजर कैपिटल बजटिंग मैनेजर फंड रेजिंग मैनेजर पोर्टफोलियो मैनेजर then acting as a controller उसमें financial accounting manager cost accounting manager tax manager data processing manager and internal auditor की भूमिका निभाते हैं role of finance executive in today's world which is in the past the role of the chief finance officer is no longer continued to accounting financial reporting and risk management ये तीनों से भी बढ़ के हो गया इट इज अबाउट बीइंग ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव partner being a strategic business partner with chief executive officer some of the key differences that highlight the challenging role of the cfo are as below what cfo used to do budgeting करता था अभी भी budgeting है forecasting करता था वो तो है ही है accounting पहले करता था अभी की रेंज में मैनेजिंग एम एंड एज आ गया है ठीक है ट्रेजरी कैश मैनेजमेंट था अभी क्या है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस फॉर एग्जांपल
by customer or product, ठीक है। प्रिपेयरिंग इंटर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, प्राइस, यहाँ पर आगे हम अभी की डेट में प्राइसिंग एनालिसिस, ठीक है। प्रिपेयरिंग क्वार्टरली एनुअल फाइलिंग ऑफ द इन्वेस्टर्स, यहाँ पर डिसीजन अबाउट द आउटसोर्सिंग की डिसीजंस लेने लायक, टैक्स फाइलिंग था पहले, ओवरसीइंग द आईटी फंक्शन पूरा, ट्रैकिंग द अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, यहाँ पर ओवरसीइंग द एचआर फंक्शंस पर देखने लग गया, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मैनेजमेंट का, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग समटाइम्स ओवरसीइंग दिस फंक्शन, देन अगेन आल्सो रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे फंक्शन आ गए हमारे, ठीक है। फाइनेंसिंग चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स के। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी की बात कर लें तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड insolvency, there are various factors like the price of the product, services, demand, price of the inputs, raw material, labor, etc., which is to be managed by an organization on a continuous basis. Proportion of the debt also needs to be managed, ठीक है। तो जितना उधार लिए हैं उसको proportions वो भी मैनेजमेंट करना है by an organization very delicately. Higher debt मतलब ज़्यादा उधार requires a higher interest, and if the cash inflow is not sufficient it will put lot of pressure to the ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सीधी सी बात है, ज़्यादा उधार ज़्यादा इंटरेस्ट देना है तो, और अगर कैश फ्लो ज़्यादा नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स विल पुट स्ट्रेस टू द फर्म, ठीक है। वो तो प्रेशर डालेंगे कि हमारा इंटरेस्ट, तो इफ ऑल द अबव फैक्टर्स आर नॉट वेल मैनेज्ड बाय द फर्म इट कैन क्रिएट सिचुएशन नोन एज डिस्ट्रेस। क्या होता है, डिस्ट्रेस क्रिएट होता है। सो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज a position where cash inflows of the firms are inadequate, ठीक है, इतने नहीं आ रहे कैश इनफ्लो to meet all its current obligations, तो जो current obligation है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। Now if the distress continues for a long period of time, firm may have to sell its assets, हो सकता है उसको assets बेच कर पैसे लाना पड़े और उसको पेमेंट करनी पड़े, जो उसके जहाँ से उधार लिया है उसको इंटरेस्ट चुकाने के लिए, पैसे चुकाने के लिए, इवन मेनी टाइम्स एट ए लोअर प्राइस जो है उसको सेल करना पड़ते हैं उसको एसेट्स। फर्दर व्हेन द रेवेन्यू इज इनएडिक्वेट, जब रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो रिवाइज द सिचुएशन, फर्म्स विल नॉट बी एबल टू मीट सो ऑब्लिगेशन एंड बिकम इनसॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट नहीं रहती है, इनसॉल्वेंट हो जाती है, इसको बेचना पड़ता है। द इंसॉल्वेंसी बेसिकली मीन्स इनएबिलिटी, इंसॉल्वेंसी मीन्स इनएबिलिटी of a firm, inability of a firm to repay the various debts, various उधार जो ले रखे हैं उसको पे करने में उसको नाकाबिलियत है, एंड इज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद द रिलेटेड डिसिप्लिन की बात करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद द रिलेटेड डिसिप्लिन इज an integral part of the overall management. Financial management is not a totally independent area. Financial management totally independent area तो नहीं है ये, is not a totally independent area. It draws heavily on the related disciplines and it is studied mainly economics, accounting, production, marketing, and quantitative methods. Even though these disciplines are interrelated, there are key differences among them. Some of the relationships are being discussed below. Financial management and accounting की हम बात कर लेते हैं। The relationship between the financial management and accounting are closely related to the extent that accounting is an important input in the financial decision-making. In other words, accounting is a necessary input into the financial management function. Financial accounting जो होता है basically that generates information related to the operations of the organization. तो accounting जो है operations से लेना देना है। accounting का लेना देना किससे है, operations। operations क्या होता है, कोई काम कर रहा है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब डे टू डे का जो ऑपरेशन होता है उसकी बात यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की हो जाता है। द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग ऑपरेशन ऐसे याद रखो, अकाउंटिंग के लेन देन ऑपरेशन से अकाउंटिंग the outcome of the accounting is the financial statement such as the balance sheet, income statement, and the statement of the changes in the financial position. The statement of changes in the financial position में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हमें तीन बातें पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में देख देना, अकाउंटिंग का होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन तरह की होती है, एक होता है बैलेंस शीट होता है, एक होता है इनकम स्टेटमेंट होता है, ठीक है,
एक होता है स्टेटमेंट ऑफ द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। तो तीन चीजें याद रहेंगी, एक तो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन दीज स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स हेल्प्स द फाइनेंशियल मैनेजर्स in gauging the past performance and future directions of the organization. Though financial management and accounting are closely related, still they differ in the treatment of the funds and also with regard to the decision making. Some of the differences are treatment of the fund. In accounting में क्या होता है, the measure of the funds is based on the accrual principle. इसमें accrual principle पर measurement of the funds होता है. That is, revenue is recognized at the point of sale and not when collected, and expenses are recognized when they are incurred rather than when actually paid. ठीक है, at the moment. तो इसमें जब एक्चुअली की बात नहीं होती है, एक्चुअली मतलब जैसे जैसे सेल्स होता है तो वो मानते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जब हो रहा है एक्चुअली की बात नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्रूअल बेस्ड, जैसे एक्रूअल जैसे सैलरी होती है, सैलरी हम काम करते जा रहे हैं और इट इज गेटिंग एक्रूड, सैलरी इज गेटिंग एक्रूड एट द एंड ऑफ द मंथ वी गेट द सैलरी। ठीक है, एक्रूड होती रहती है और एट द एंड ऑफ द मंथ वी गेट द सैलरी। तो एक्रूड प्रिंसिपल पर भी ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स होता है किस केस में, accounting principle में। The accrual based accounting data do not reflect fully the financial conditions of the organization। तो fully तो फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं बता सकती, क्योंकि हम सामान बेचते हैं, पैसे तो नहीं आ रहे हैं ना, हमने रखा है, किसी को दे रखे हैं हमने बहुत सारा सामान, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। वो एक्चुअल बेस्ड पे चल रहा है कि एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एट द एंड ऑफ 6 मंथ, जैसे भी है उस पर आएगा। उसी तरह से मशीनरी भी एक लगा रखी है कि उसमें रिटर्न 6 महीने में आएंगे, 1 साल में आएंगे, तो वो एक्चुअल बेस पे चल रहा है, लेकिन एक्चुअल तो नहीं है ना। An organization which has earned profit, sales less expenses may set to be profitable or in the accounting sense, but it may not be able to meet its current obligations। तो हमारी ये बात करें कि वो हो सकता है वो सेल कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत सारे लोगों को सेल कर चुका है और उसमें से लेकिन प्रॉफिट वो तो कह रहा है कि हमने सेल कर दिया, प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, लेकिन अभी तो एक्चुअल बेसिस पे हो गया है, लेकिन एक्चुअल में करंट में तो नहीं हुआ, पैसा तो हाथ में नहीं आया है अभी तक। ठीक है, वो उधार पे क्रेडिट पे चल रहा है, पूरा एक्चुअल बेसिस पे चल रहा है, तो इसीलिए वो करंट में तो नहीं है, तो करंट ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए पैसा नहीं है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द लिक्विडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ से अनकलेक्टेबल receivables हो जाते हैं कई बार, such an organization will not survive regardless of its level of profit, whereas the treatment of funds in the financial management is based on the, कैसा होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कैश फ्लो बेसिस पर ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग हो गया और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमेशा कैश फ्लो ही चलता है, पैसा दो भैया। ठीक है सर, मान लो the revenue are recognized only when cash is actually received, that is cash inflow and expenses are recognized when actual payment जब कर दिया तो हमारा expenses count होता है। This is so because the finance manager is concerned with maintaining solvency of the organization by providing the cash flow necessary to satisfy its obligations, acquiring and financing the assets needed to achieve the goals of the organization. This cash flow based return helps financial managers to avoid the insolvency and achieve desired financial goals की बात होती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू कलेक्ट एंड प्रेजेंट द financial data of the past, present, and future operations of the organization. The financial managers use these data for the financial decision making. It is not that the financial managers cannot collect data or accountants cannot make the decisions, but the chief focus of an accountant is to collect data and present the data, while the financial manager's primary responsibility related to financial planning, controlling, and decision making. Thus, in a way, it can be stated the financial managers begins when accounting ends. The financial planning begins when the accounting ends. Actually, financial management and other related disciplines for its day-to-day decisions making process. Financial management also draws on other related disciplines such as marketing, production, and quantitative methods. The marketing, production, and quantitative methods जो होते हैं apart from accounting, तो accounting एक part रह जाता है उसका, इसके अलावा वो मार्केटिंग भी देखते हैं, प्रोडक्शन देखते हैं और क्वांटिटेटिव मेथड्स
For instance, financial managers should consider the impact of the new product. ठीक है, development का impact देखना है, promotion plans देखने हैं made in the marketing area, such as since their plans will require the capital outlets and they have an impact on the projected cash flow के ऊपर फर्क पड़ेगा. Likewise, changes in the production process may require capital expenses. Definitely कुछ change production process करना तो capital expenditure की जरूरत पड़ सकती है, नई मशीनरी की जरूरत पड़ सकती है, which the financial managers must evaluate and finance. ठीक है. Finally, the total tools and techniques of the analysis developed in the quantitative methods. Quantitative कहते हैं क्वालिटी होता है, quantitative क्वांटिटी की बात होती है. Methods of discipline are helpful in analyzing the complex financial management problems. Financial decision areas क्या कहते हैं? Investment analysis, working capital management, day-to-day वाली capital, sources and funds of the capital, determination of the capital structure, dividend policy के देना कैसे लगेगा पैसा, analysis of the risk and returns. ठीक है. तो प्राइमरी डिसिप्लिन के अकाउंटिंग जो होता है इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे. और क्या है दूसरा क्या सपोर्ट करता है, अदर रिलेटेड डिसिप्लिन मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड क्वांटिटेटिव मेथड जो होते हैं इसको ये सब करने में हमें सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में सपोर्ट करते हैं. और जो होता है कि रिजल्ट क्या होता है, इससे शेयर होल्डर्स की जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है. शेयर होल्डर क्या होती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है. तो ये हमने देखा इम्पैक्ट ऑफ अदर डिसिप्लिन on financial management. The above figure depicts the relationship between financial management and supportive discipline or financial management का supportive discipline. तो हमने यहाँ पर relationship देखा. The marketing, production and quantitative methods are thus only indirectly related to the day-to-day decisions making by the financial managers and are supportive in nature, while accounting is the primary discipline on which the financial managers draw considerably. Even economics can also be considered as one of the major disciplines which help the financial managers to gain knowledge of what goes on in the world outside the business. Agency problem and agency cost. और देखो conflicts in the interest, अगर agency problem के अगर conflict आ जाता है तो ऑनर शेयर होल्डर के ऊपर फर्क पड़ता है और एजेंट मैनेजर पे भी फर्क पड़ता है. तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म सोलली एक ही बंदे के ऊपर है तो पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरी या फिर पार्टनरशिप. ठीक है. इन दोनों फर्म की बात करें तो ऑनर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. ठीक है, डेफिनेटली ऑनर्स उसमें क्योंकि एक सोल है तो उसमें मैनेजमेंट ही पार्टिसिपेट करेगी और पार्टनरशिप है तो उसमें भी वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है. बट इन कॉर्पोरेट से, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, owners are not active in the management, so there is a separation between the owner, shareholder and manager. ठीक है, तो वहाँ पर मैनेजर्स होते हैं और डिफरेंस रहता है, सेपरेशन रहती है ओनर्स, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स के बीच में. इन थ्योरी मैनेजर्स शुड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द shareholders. However, in reality, managers may try to maximize their individual goals like the salary, perks, etc. So there is the principal agency agent relationship between the managers and the owners. ठीक है, owners का इंटरेस्ट जो होता है वो वेल्थ मैक्सिमेशन हो सकता है, लेकिन मैनेजर्स क्या होता है वो अपने ही गोल देखते रहते हैं, सैलरी हाइक कर, अपना सैलरी बढ़ाना, पर्क्स लेने ज़्यादा से ज़्यादा, विच इज़ नोन एज द एजेंसी प्रॉब्लम. इसको क्या कहते हैं, एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं, जिसमें मैनेजर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपना देखते हैं इंस्टेड ऑफ द पूरा शेयर होल्डर का. ठीक है. इन ए नटशेल एजेंसी प्रॉब्लम इज द चांसेस दैट मैनेजर्स मे प्लेस पर्सनल गोल्स अहेड ऑफ द गोल ऑफ द ऑनर्स. एजेंसी प्रॉब्लम लीड्स टू द एजेंसी कॉस्ट. ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या आता है, एजेंसी कॉस्ट बढ़ती है. एजेंसी कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट borne by the shareholders to monitor the managers and control the behavior so as to maximize the shareholders wealth. Basically हमारा एम क्या रहता है, shareholders की wealth maximization. जनरली एजेंसी कॉस्ट तो 4 टाइप्स की होती है. एक होती है मॉनिटरिंग, एक होती है बॉन्डिंग. ठीक है, सबसे पहले मॉनिटरिंग, देन बॉन्डिंग, देन अपॉर्चुनिटी एंड द स्ट्रक्चरिंग. ठीक है. Addressing the agency problem. The agency problem arises the manager's interest are not if the managers does not align to the interest of the debt lender and equity investors. The agency problem of the debt lender would be addressed by imposing negative
covenants. That is, the managers cannot borrow beyond a point. Managers जो है borrow नहीं कर सकते हैं beyond a cannot borrow beyond a point. This is one of the most important concepts in modern day finance, and application of this would be applied in the credit risk management of the bank. Fundraising, valuing distressed companies. Okay. Agency problem between the managers and shareholders can be addressed if the interests of the managers are aligned to the interests of the shareholders. It is easier said than done. ठीक है, दूसरा देखते हैं. However, following efforts have been made to address these issues. Managerial compensation is linked to profit of the company to some extent, and also with the long-term objective of the company. Managerial compensation to the employee is also designed to address the issue with the underlying assumption that the maximization of the stock price is the objective of the investors. Because the employee is also designed to address the issue of the underlying assumption of the maximization of stock price is the objective of the maximum stock price is the objective of the investors. ठीक है, effective affecting the monitoring can be done. Affecting monitoring can be done. The summary हमारे पास ये आ गया है इस चैप्टर का. ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम देख लेंगे. दस क्वेश्चन है. Focus of financial management is mainly concerned with the decision related to financing, investing, dividend या अलग देखो तो इसका आंसर अलग देखो है. The main objective of financial management is to secure profitability, maximize shareholders wealth, and enhancing the cost of debt. इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा शेयरहोल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना रहता है. The shareholder value maximization model holds that the primary goal of the firm is to maximize its company profit, equity, market value, working capital. Shareholders value maximization, shareholder का value maximization model जो होता है, holds the primary goal of the firm. The primary goal of the firm is to क्या होना चाहिए इसका भैया, शेयरहोल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल है. बेसिकली इसका तो वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात होती है तो वर्किंग कैपिटल की बात आती है. तो थर्ड का डी होना चाहिए. देखेंगे थर्ड का डी है, थर्ड का सी है. थर्ड का यहाँ पर सी दे रखा है आंसर. तो देखते हैं थर्ड का सी कैसे है. थर्ड का सी दे रखा है, यानी मार्केट वैल्यू की बात की है वहाँ पर. थर्ड का सी दे रखा है. शेयर होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो होता है, that was the primary goal of the firm is to maximize its मार्केट वैल्यू. शेयर होल्डर में मार्केट चलती है. चलो ठीक है, चलो शेयर होल्डर जो होता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन जो होता है मार्केट वैल्यू के ऊपर, प्राइमरी गोल मैक्सिमाइजेशन मार्केट वैल्यू. समझ में आगे बात चलेगा. ओके डन, चलो आगे चलते हैं. Wealth maximization. Wealth maximization approach is based on the concept of the cost benefit analysis, cash flow approach, time value of the money, and all of the above. कॉस्ट वैल्यू, कैश फ्लो भी देखना, टाइम वैल्यू देखना, तो इसमें तो डेफिनेटली अलग की अप्रोच भी आएगा. फोर्थ का मैनेजमेंट ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसेस को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं. उसमें सब कुछ देख लिया उसने. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमेशन गोल. देखिए सिर्फ शेयर होल्डर के डिसएडवांटेज क्या है, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमेशन गोल के डिसएडवांटेज क्या है. एम्फेसिस है शॉर्ट टर्म, इग्नोर्स द टाइमली रिटर्न, रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्सेज, ऑफर्स नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड द शेयर प्राइस. ठीक है, तो इसमें क्या डिसाइड है, शेयर होल्डर्स करती है लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करती है, शॉर्ट टर्म के ऊपर नहीं रहता है. ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज
Ignores the timing of the returns, recalls immediate receipts. Ignores the timing of the return. हाँ, ये इसका आंसर आई थिंक बी आएगा। 6 का देखते हैं क्या है इसका आंसर, देखते हैं 6 का क्या है। 6 का डी है। 6 का डी है। 4th का डी, 5th का सी और 6 का डी है। ठीक है, तो इसका डी बोल रहे हैं। Offers no clear relationship between the financial decisions and the share price। तो क्लियर रिलेशनशिप नहीं रहता है फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में और शेयर प्राइस के ऊपर। तो 6 का डी दे दिया है। चलो 7 पे आ जाते हैं। The most important goal of financial management is profit maximization, matching income and expenditure using business assets effectively या wealth maximization। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है बेसिकली किसकी बात करती है, प्रॉफिट या वेल्थ, इन दोनों में से एक है। जल्दी बोलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेल्थ मैक्सिमेशन की बात करती है, प्रॉफिट मैक्सिमेशन की बात करती है। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करनी चाहिए वेल्थ मैक्सिमेशन की। चलो देखते हैं ये क्या कहते हैं। 7th का देखते हैं क्या है। 7th का डी है, यानी वेल्थ मैक्सिमेशन की बात होती है, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमेशन में प्रॉफिट तो रहती है, रिस्क की भी बात करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। To achieve the wealth maximization, the finance manager has to take careful decisions to investment, financing, dividend, ये सभी की बात यहाँ पे करते हैं, कोई भी सोच सकते हैं। Early in the history of the finance, the important issue was liquidity, technology, capital structure, financing option। तो पहले हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट इशू होता था? अर्ली इन द हिस्ट्री लिक्विडिटी मेन इशू था, टेक्नोलॉजी था, कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंसिंग ऑप्शंस। तो पहले फाइनेंसिंग ऑप्शंस आई थिंक से पहले इंपॉर्टेंट इशू फाइनेंसिंग ऑप्शंस था। कैपिटल स्ट्रक्चर एक बार देखेंगे तो 9th का क्या है। 9th का ए है इसका। 9th का ए है, ए यानी लिक्विडिटी मेन इशू होता था अर्ली 9th का ए। अच्छा, इन द अर्ली हिस्ट्री, अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस इंपॉर्टेंट इशू क्या होता था? लिक्विडिटी रहता था। मतलब इतनी जल्दी, मतलब बाद में वो क्रेडिट भी ज़्यादा चलता था, तो लिक्विडिटी कम होती थी। तो पहले हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मेजर इशू क्या रहता था? लिक्विडिटी रहता था। तो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल दैट हेल्प डिफाइन एंड एक्सप्लेन द डिसिप्लिन ऑफ द फाइनेंस, डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग है माइक्रो इकोनॉमिक, रिस्क एंड रिटर्न, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन या ऑल ऑफ द अबव। माइक्रो माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक। रिस्क एंड कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो आई थिंक मैक्रो में आता है। इन्फ्लेशन ऑल ऑफ द अबव, आई थिंक इन्फ्लेशन आना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न, माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या, रिस्क एंड रिटर्न, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आना चाहिए। आई थिंक इन्फ्लेशन आना चाहिए। 10th दिक्कत क्या है? 10th का क्या है? 10th का है डी। 10th का क्या है? 10th का डी है, यानी ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। रिस्क एंड रिटर्न, तो इसका सही आंसर है डी हमारा, ऑल ऑफ दी अबव। रिस्क एंड रिटर्न, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन। Risk and return भी है microeconomics variable that help define explain the discipline finance, risk and return। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया और तीसरा हो गया इन्फ्लेशन। इन्हीं को कहना है माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल दैट हेल्प डिफाइन एंड एक्सप्लेन द डिसिप्लिन ऑफ द फाइनेंस करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विद, किसके साथ रिलेशन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? मेनली कंसर्न्ड विद एक्वायरिंग एंड डेवलपिंग द एसेट्स टू फॉरवर्ड ओवरऑल बेनिफिट, acquiring, financing, and managing the assets to accomplish the overall goal of business enterprise, the effective management of the business, sole objective of the profit maximization। The profit maximization, तो I think इसका acquiring, financing, and managing the assets to accomplish the overall goal of the business
होना चाहिए मेरे हिसाब से 11th का बी होगा। चेक करते हैं 11th का क्या है। 11th का बी है। तो देखने में ब्यूटीफुल लाइन लग रही है, वही होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक्वायर करना, फाइनेंस करना, मैनेज करना एसेट्स को ताकि ओवरऑल गोल ऑफ द बिजनेस अकम्प्लिश हो सके, फॉरफिट थोड़ी हो सके। ट्वेल्थ देखते क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी फॉलोड बाय द फाइनेंस मैनेजर्स फॉर मेजरिंग एंड मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी फॉलोड बाय द फाइनेंस की जरूरत नहीं है करने की। अकाउंटिंग प्रॉफिट एनालिसिस, कैश फ्लो अप्रोच, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। तो टाइम वैल्यू, कॉस्ट बेनिफिट देखना है, कैश फ्लो अप्रोच, अकाउंटिंग प्रॉफिट एनालिसिस ये वाला जरूरत नहीं है। आई थिंक अकाउंटिंग प्रॉफिट अकाउंटिंग कैश फ्लो अप्रोच देखना है तो क्या है इसका यार, देखेंगे जरा एक बार इसका आंसर। 12th का ए करेक्ट है, 12th का ए ही है। अकाउंटिंग प्रॉफिट एनालिसिस नहीं, कैश फ्लो अप्रोच में चेक करना है, कैश फ्लो वाला नहीं, कॉस्ट बेनिफिट देखना है और एप्लीकेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी देखना है। ये इसका फॉर नीड नॉट बी फॉलोड टू फाइनेंस मैनेजर। अकाउंटिंग मैनेजर जो होते थे वो देखते थे अकाउंटिंग का प्योरली। आज की डेट में अकाउंटिंग अकेला नहीं रह गया, इसके अलावा बहुत चीज़ें रह गई हैं। कैश फ्लो अप्रोच कैसे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के एप्लीकेशन, टाइम वैल्यू, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ बहुत फैक्टर आ गए। ठीक है, अकाउंटिंग इज नॉट द ओनली थिंग दैट नीड टू बी फॉलोड। तो ये हो गया हमारा इसके आंसर, चैप्टर खत्म हो गया। ओके बाय बाय टाटा।